Good afternoon, students. Welcome to the another session of Information and Technology. In this class, we will start a new lesson, that is digital presentation. In the last few class from the term 1 and after term 2, we have covered word processor, we have covered spreadsheet, and today we will start a new topic of the same package, that is presentation. Before we start this chapter, we need to understand the reason behind the introduction of this chapter, the reason behind the existence of this chapter, or the reason behind this particular application. We know that how presentation is important in our day-to-day life. Whether we talk about a classroom teaching, the material has to be presented in a dynamic and an interactive mode of content. Then only we can expect that okay, the students are going to listen us. At the same time, if we are going to attend a workshop, we are going to conduct a seminar. In all these scenarios, the audience has to be involved with such content that can be eye-catching. To create such content, whether we talk about a management meeting, whether we talk about a workshop, an orientation program, a seminar, a product marketing, or any kind of session like a career counseling session, any awareness program, whichever program you will find, whether you attend by yourself in a school auditorium or you find it in a television shows or anywhere, you will find the content, the material are presented in the form of a presentation. Why? Because it makes the things more organized. We get information in brief form with more explanation. Because of the presentation, we have so many applications, so many tools, so many features in one single platform where things can be easily explained. आप किसी भी ऑडियंस को, किसी भी मास को, किसी भी ग्रुप को कोई चीज़ आप वर्बली बता रहे हो, सेम कंटेंट को आप एक बड़े स्क्रीन पे अलग अलग प्रेजेंटेशन मटेरियल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन ईच. So this is something very important in our day-to-day life. In any stage, whether we talk about public speaking, whether we talk about lectures, whether we talk about drama, demonstration, any sort of thing. So digital presentation is a very important part of our day-to-day life. So this is what we have in the introduction. In the entire black chapter, whatever we are going to study, that how we can make our content more presentable, more dynamic, more interactive, more systematic, and more organized by using different features like charts, graph, diagram, shape, pictures, animated audio, video, graphics object. आप मल्टीमीडिया के सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए. तो इस फर्स्ट पेज में आपको एक डायग्राम, एक प्रेजेंटेशन का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ, and that only I have tried to explain you that whether we talk about any area, whether I talk about classroom teaching, online teaching, any sort of workshop, seminar, orientation program, or a product marketing कैंपेन हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, किसी तरह का कुछ एक ऐसा सेशन हो जिसमें आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में एक अवेयरनेस ला रहे हो, हर जगह आपको एक प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट के रूप में अवेलेबल मिलेगा. Sorry. Now, what are the applications that we have to create a presentation? Normally, we are very much familiar with an application that is MS PowerPoint, something which is easily available and quickly accessible or understood by any novice user. Except MS PowerPoint, we do have OpenOffice का Impress, Adobe Director, 3D Studio, and there are certain other applications. In this chapter, we will talk about Impress. Like we are talking about all the applications from OpenOffice itself. We have discussed Writer. We have seen Spreadsheet ka Calc. Now we are going to study Impress. Now, this particular
OpenOffice Impress, or before we talk about the OpenOffice Impress, there is one other topic that we need to understand. That when we talk about a presentation, we are talking about a slide. कि presentation का एक basic component क्या है? Slide है. That slide is a individual sheet, a kind of, it refers to an individual sheet, electronic page, which consists of many things, which have title, which have text, which have graph, object, picture, animated effects. So this slide about which we are talking about, a kind of electronic page or electronic document, that slide can be made more wayful, more powerful, and more interactive, or more beneficial, or more productive by using some add-on material. आप किसी भी स्लाइड को, चाहे आप इम्प्रेस में काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन बनाओगे यानी आप स्लाइड क्रिएट करोगे. स्लाइड यानी एक सिंगल पेज जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कंटेन करते हो, ब्रीफ करते हो, एक्सप्लेन करते हो. आपको लगता है कि एक स्लाइड में मुझे इतना इंफॉर्मेशन देना चाहिए, आप देते हो. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्लाइड को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तब बना सकते हैं जब आप उसके साथ कुछ एड ऑन मटेरियल का यूज़ करें, यानी कुछ एडिशनल मटेरियल का यूज़ करें, लाइक हैंडआउट, स्पीकर नोट, आउटलाइन, मास्टर्स and slideshow. Let's talk about these. These are the things that we have to discuss. Then we will just move into the next topic in the next class. तो handout क्या है? Handout is basically the hard copy of the slides or hard copy of the presentation. होता क्या है कि आप किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा रहे हो जहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं, तो जो कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप, द रिसोर्स पर्सन used to give a hard copy of the presentation to the audience before they start their program. Why? Because they want the audience should have an idea about the presentation beforehand. At the same time, in case the audience do not have that same attention throughout the program, then they can just recall or reconnect the topic immediately in between from any time. हैंडआउट का काम है कि 100 ऑडियंस बैठी हुई है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100 ऑडियंस लगातार आपको ध्यान लगाकर सुन रही है. तो उस पर्टिकुलर उस ग्रुप को जो कि लगातार ध्यान नहीं दे पा रही, जिसको बीच में अटेंशन ब्रेक हो रहा है, उनको इजीली रिकनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प हो जाता है हैंडआउट से. जो मीटिंग में बैठ रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आज इस पर्टिकुलर सेशन में किस टॉपिक पे बात होगी, क्या मैं इसमें कंफर्टेबल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा. तो मास्टर्स एक सपोर्टिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स है जो व्यूअर्स को पहले से दे दिया जाता है और जिसमें सारे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को एक कंप्रेस्ड प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता है कि वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर उनको उसी वर्कशॉप को, उसी टॉपिक को अपने अलग इंस्टीट्यूशन या अलग जगह पर खुद से लेना हुआ तो इजीली सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं. उन्हें बहुत सारी चीज़ें को नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो handout is basically the hard copy of the presentation. Speaker note. This is something very important and very helpful for the speaker, the person who is speaking using a presentation. Like, you have a presentation tomorrow, you are making a rehearsal today, and when you are having a rehearsal, you are noticing one thing, that आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप फंस रहे हो, you are not able to explain that topic properly. What you will do? You can take the help of speaker note. आप स्पीकर नोट पे अपना कुछ भी इनपुट, कुछ भी रेफरेंसेस, कुछ भी एडिशनल रिमार्क्स को लिखकर पहले से रख सकते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में मोड में डिस्प्ले करेंगे तो ऑडियंस को स्लाइड शो में स्क्रीन पे स्लाइड दिखेगा, बट एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज स्पीकिंग उसको अपने सिस्टम पे यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही विल गेट द स्पीकर नोट and that will help him to just recall what exactly I have to speak on this particular topic.
So in speaker note is basically an additional reference material which can be put up by the speaker beforehand, that can be used while he is speaking actually in front of the crowd. Then outline, handout, hard copy presentation, स्पीकर नोट एक एडिशनल हेल्प है स्पीकर के लिए। आउटलाइन क्या है? आउटलाइन एक समरी है। अगर आपका पीपीटी 10 स्लाइड्स का है, उस स्लाइड्स में आपके बहुत सारे कंटेंट होंगे, बहुत सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होंगे। तो आउटलाइन क्या करता है, पूरे के पूरे पीपीटी को, पूरे के पूरे 10 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन को एक समराइज्ड व्यू जनरेट करता है, एक मिनिएचर व्यू जनरेट करता है, जिसमें सिर्फ टाइटल रहते हैं, सब टाइटल रहते हैं, और जो आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट है, इट emits और इट एक्सक्लूड ऑल सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, चाहे आप पिक्चर्स हो, टेबल हो, कोई चार्ट हो, जो भी आप इंसर्ट करके रखे हैं स्लाइड में, वो आपके आउटलाइन से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड यानी हट जाता है। तो आउटलाइन इज बेसिकली द समराइज्ड और मिनिएचर व्यू ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन which include everything except the graphical object, chart, picture, table and these kind of things। मतलब आपको आउटलाइन से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आपका ऑर्डर है इंफॉर्मेशन का, उसको आपको आइडिया मिल जाता है। मास्टर्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक suppose I have to create a presentation for my company, and this company have a logo, this company have a punchline, and the company wants that in all the presentation from all department, they should have a common background color, they should have a common font size, font style। मतलब सिर्फ कंपनी के सिनेरियो में नहीं, आप किसी पर्सनल प्रेजेंटेशन की भी बात करें। जैसे आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अगर 15 स्लाइड्स है, तो 15 स्लाइड्स के सारे स्लाइड्स का बैकग्राउंड कलर सेम हो, फॉन्ट का स्टाइल सेम हो, फॉन्ट का साइज सेम हो, टाइटल का फॉन्ट स्टाइल एक हो, फॉन्ट साइज सेम हो, कंटेंट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सेम हो, उनका लाइन स्पेसिंग सेम हो, उनका बॉर्डर्स का स्टाइलिंग सेम हो। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं एक ही बार में बाय डिफाइनिंग द लेआउट यूजिंग अ मास्टर। सो बेसिकली मास्टर So I was saying that through masters you can have a predefined layout which you can use for entire presentation। आप उसी लेआउट को पूरे प्रेजेंटेशन में फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाता है, आप एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर पाते हैं। Then we have slide show। The slide show is basically the full screen view of a slide। आपके पास 15 स्लाइड्स है, 20 स्लाइड्स है, आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, आप ऑडियंस को स्लाइड शो डिस्प्ले करेंगे, जिसमें आप जैसे F5 प्रेस करेंगे, नॉर्मली एक शॉर्टकट है सारे स्लाइड शो एप्लीकेशन में, आपका पूरा स्लाइड्स एक फुल स्क्रीन मोड पे आपको डिस्प्ले होगा, एंड द ऑडियंस विल गेट द कंटेंट इन फुल स्क्रीन मोड इन ए मैक्सिमाइज व्यू। तो स्लाइड शो इज द full screen view of a presentation। These are the content that can help, that can make your presentation much and much productive, much and much better। So these things that we have to discuss today। जो इसके बाद है हम लोग आगे देखेंगे। इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी तरह का कोई डाउट है, प्लीज पुट अप योर डाउट इन द ग्रुप, then we just look into that and we will just clear the things। at the same time जो आपको assignments वगैरह है वो आपको Google Classroom as well as in your Google WhatsApp group you will get it। Thank you everyone, stay home, sorry this is for the day, thank you everyone, stay home and stay safe।